Welcome to News 9. You are watching On Point with me. In today's edition, we have two on points. Mohan Bhagwat sets up a debate with his Dharma and temple-mosque dispute. Hardliners question RSS Chief. Khalistani terrorists neutralized by police in Uttar Pradesh. Terror group masterminded by active servicemen in UK Army and backed by the ISI. But before that, headlines. Bangladesh sends note verbatim asking India to send ousted Prime Minister Sheikh Hasina back to Bangladesh. Protests erupt outside Omar Abdullah's residence over reservation policy in Jammu and Kashmir. Rahul Gandhi claims Parbhani violence victim killed because he was a Dalit. Akhilesh Yadav slams BJP amid Sambhal excavation. Delhi High Court denies anticipatory bail to former Shweni IAS officer Pooja Khetkar accused of falsifying facts in UPSC exams. Congress denies link to vandalism at Pushpa 2 actor Allu Arjun's residence in Hyderabad. Game set match for badminton star PV Sindhu, who gets hitched to Venkata Datta Sai in a traditional Telugu ceremony. BJP issues charge sheet against Kejriwal. Kejriwal launches counter attack on BJP, says they have no agenda, no CM candidate. And cold wave grips Kashmir. Dal Lake freezes in Srinagar. Weather department advises tourists to follow traffic advisory. RSS Chief Mohan Bhagwat, who has been consistently advocating a conciliatory stand on religious disputes, has once again spoken on the subject. He started it in 2022. This time he said that atrocities committed in the name of Dharma stem from lack of true understanding of Dharma. अज्ञम सुखम आराध्य जो अडाणी आहे त्याला लगेच समजावता येतो. सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, त्याच्यापेक्षाही लवकर जो जाणतो समजतो. पण ज्ञान लव दुर्विदग्ध, थोड्याशा ज्ञानाने खूप फुगलेला, ब्रह्मापि नरम न रंजयती, त्या माणसाला ब्रह्मदेव सुद्धा समजवू शकत नाही. ते फार जिकिरीचं काम आहे. आणि ते समजवायला जावं तर समाज म्हणतो हा चुकीचा आहे, याला हकला, याला मारा, याला ठोका. हे समाजाचं सहन करून समजावं लागतं. धर्म हा समजावा लागतो. तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो. जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत. आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात. नुसते पंथ असून चालत नाही. बाबांनी गोष्ट केली, विवेक पाहिजे. ज्या पंथाला विवेक प्राप्त होतो त्याला आपण संप्रदाय म्हणतो. सम्यक प्रदाय जो देतो, सम्यक रीतीने देतो. Few days ago, Mohan Bhagwat made headlines when he urged people to avoid stirring up issues on the line of Ram Temple. He condemned attempts to search for temples beneath functioning mosques, calling such action unacceptable. Bhagwat emphasized that some individuals emboldened by the construction of Ram Temple are trying to become leaders by stirring up issues needlessly. श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं. परंतु असं केलं म्हणजे हिंदू मध्ये नेता होता येतं
म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल हे नाही जाणार. आणि आपल्या देशामध्ये जे संविधान आहे, आपल्या देशातल्या लोकांनीच आपल्या देशातून परंपरागत त्यांना लाभलेली बुद्धी आणि मन ह्याच्यातूनच त्याची सृष्टी झालेली आहे. त्याबरोबर प्रामाणिकपणाने चाललं पाहिजे. पंथोपंथांचे आणि पक्षांचे चष्मे काढून जर पाहिलं आपण जगाकडे तर आपल्याला स्पष्ट दिसतं हा धार्मिकपणा चालणार नाही. एकतेचीच सगळी रूपं आहेत आणि एकताच आपली आहे. तर मग जात पात, उंच नीच आणि अस्पृश्यता या गोष्टी आल्या कुठून? आल्या असतील तर त्या लॉक, स्टॉक अँड बॅरल फेकून दिल्या पाहिजे. इंग्रजांनी तर आपलं ब्रेन वॉशिंगच केलं. आपल्या पूर्वजांबद्दल, आपल्या परंपरेबद्दल, आपल्या इतिहासाबद्दल, संस्कृतीबद्दल नुसतं अज्ञान नाही तर तिरस्कार उत्पन्न केला. आणि तो तसा उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न आजही चालू असतो. कारण प्रभुत्व पाहिजे सगळ्यांना. आणि खरोखर भारत असा विश्वगुरु झाला तर ठेकेदारी संपुष्टात येईल. Even in 2022, he had spoken about it, that people should stop looking for Shivling under every mosque. Now, the question is, what is prompting Bhagwat to take this position in public again and again? Even within the Hindutva fold, criticism has emerged. Hindu saints Swami Ramabhadracharya expressed strong disagreement with Mohan Bhagwat. उनके दोनों बयान अदूरदर्शी हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं और तुष्टीकरण की नीति से प्रभावित हो सकते हैं. हमको अपना अतीत तो चाहिए ही चाहिए ना. सह अस्तित्व का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे. वो अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन करें. हमने तो उनकी मस्जिदें कभी नहीं तोड़ी. जब उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े हैं तो हमें मंदिर चाहिए ही चाहिए. मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं हो सकते. मैं फिर कह रहा हूँ कि मोहन भागवत हम हिंदुओं के अनुशासक नहीं हो सकते. आचार्य उनका अनुशासक हो सकता है. उनका बयान तुष्टीकरण से, पूर्ण तुष्टीकरण से प्रभावित है और वो हिंदू धर्म के बारे में बहुत नहीं जानते कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन का अधिकार है. जहाँ जहाँ हमारे मंदिर की यदि प्रामाणिकता हो रही है तो हमको अपना मंदिर चाहिए. उनकी मस्जिद पर हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं. उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है. लगता यह है कि मोहन भागवत जी एकता की व्याख्या ही नहीं समझते. एक होकर रहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन करे. प्रत्येक व्यक्ति अपने आराध्य की पूजा करे. वे अपनी नमाज पढ़ें, हम अपनी संध्या करें. वे अपने मस्जिद में नमाज पढ़ें, हम अपने मंदिर में भगवान की पूजा करें. ये अर्थ है. ये नहीं कि हमारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए फिर भी हम क्षमा करते रहें. Now, this sentiment has been reflected by many other people. You know, there are multiple voices that have emerged, but even important is that even former Union Minister Ravi Shankar Prasad took a middle line on it. देखिए, रामभद्राचार्य जी बहुत महान संत हैं. उनका भी सम्मान, परम आदरणीय स्वतंत्रता का भी सम्मान. इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. So now let me present some facts and the position. One, I want to clearly state that RSS is not a religious organization. That's fact one. RSS is a social cultural organization. Fact three, RSS main objective is national unity. Now in this context, I'll ask a couple of questions and that's how the debate will be framed. Why are Hindutva hardliners not listening to Mohan Bhagwat? Is Bhagwat trying to differentiate between orthodox and progressive Hinduness? Orthodox and progressive Hinduness. Third, why are hardliners challenging RSS leadership of Hindutva? Because RSS has also shown that commitment. Now there are arguments in favor of Bhagwat, which is it is a call for moderation.
BJP, VHP had only adopted the Ram Temple movement officially, not any other movement. 1959 Kashi Vishwanath resolution was passed out, but no such movement came out of it. Third, RSS appreciates consensus on issues because when they found that there is some consensus in the larger community on Ram Temple, they went for it. That was not done for the Kashi Vishwanath earlier. Fourth, Bhagwat's stand is consistent. Fifth, it checks aggressive Hindutvas. Sixth, concerns about new disputes are valid. Seventh, sets a balanced example for addressing sensitive issues. Eighth, promotes progress rather than historical grievances. Ninth, reduces the potential for communal tension and violence. But there are people who argument against the Bhagwat's position. RSS is not the custodian of Hindutva. Another popular position is Mohan Bhagwat is not the sole spokesperson of Hindus. Third, historical injustices need to be corrected. Fourth, help preserve cultural heritage. Arguments against Bhagwat. Other temples are also as sacrosanct as Ram Temple. Sixth, legal approach to historical wrong is incorrect. Seventh, historical wrong should be addressed. So on the arguments against Mr. Bhagwat, the most important line is that how can courts decide what is right or wrong, something which has happened in last 1000 years. So these are the two frames. I am joined by Vinod Bansal, National Spokesperson, Vishwa Hindu Parishad, Desh Ratan Nigam, political analyst, Savio Rodriguez, founder and editor-in-chief, Goa Chronicle, and Professor Prasannajit Biswas, Professor of Philosophy, Northeastern Hill University. Let me straight away go to Vinod Bansal. Bansal जी, मैं आपसे पूछूंगा, संत समाज नाराज क्यों है मोहन भागवत जी से? हमने अपने फैक्ट में एक चीज दिखा दी कि संघ एक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम नेशनल यूनिटी है, वो एक धार्मिक संस्था नहीं है. Absolutely right. I do agree with you. कार्तिक जी देखिए, you have raised very valid questions and for and against the statement. And देखिए पूज्य संत क्या कह रहे हैं और उनकी क्या मंतव्य है, इसके बारे में तो संत ही बताएंगे, क्योंकि वो हमारे से सबसे सर्वोपरि हैं. देखिए, संत के ऊपर, किसी पूज्य संत के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन काम नहीं करता हमारा कोई भी, ना हम कोई कर सकते हैं, क्योंकि हम तो उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं. पूजनीय सरसंघ चालक जी से भी ऊपर हैं ये पूज्य संत, मैं बताऊं आपको. आप देखिए, इसमें कोई दोहरा नहीं है. दूसरी बात, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने क्या बोला, उसको इंटरप्रेट करने की भी मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए कोई क्षमता नहीं है. हम ऐसा मानते हैं. लेकिन एक बात समझने की है, देखिए, जो आपने कहा कि भी उनके स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी है, और जो मेजर जो थॉट है वो है द यूनिटी ऑफ द कंट्री. तीसरी बात ये भी है कि देखिए, ही नेवर सेड कि भाई नहीं ये केसेस खत्म कर दो. ही नेवर सेड कि भाई आप जो है ना वो जो कुछ दिख रहा है उसको आंख मीच के स्वीकार कर लो. नहीं, देखिए, जानबूझ करके कोई मक्खी नहीं निकल सकता. आप देखिए कि जो लोग लीगल तरीके से जा रहे हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी ना, ही टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. उन्होंने कहा भी कॉन्स्टिट्यूशनली हमें आगे बढ़ना है. तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है, all those processes are within the framework of the constitution. Either one person goes to the court or the automatic जो मंदिर वहां से प्रकट हो रहे हैं, जैसे संभल के अंदर हुआ, हरिगढ़ जैसे आप अलीगढ़ बोलते हैं तो वहां पर प्रकट हुआ. तो वो सब चीजें क्या हैं आखिरकार? ये जो सैकड़ों वर्षों की गुलामी के दौरान, सैकड़ों वर्षों की जो विदेशी आक्रांताओं ने जिस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ करके उनको ऊपर मस्जिदों में ढांचे और मदरसे और ये जो मजारे बनाई, ये किसी से छुपी हुई नहीं है. अब ये प्रश्न ये भी होता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी, इवन आफ्टर मेकिंग द लॉ ऑफ 1991, आप कह रहे हैं कि किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर का कोई स्वरूप नहीं बदल सकते, उसकी कल्चर नहीं बदल सकते. यहाँ तो देखो, मंदिर को ही पूरा उन्होंने कवर कर लिया, मंदिरों को कब्जा कर लिया, मूर्तियों को तोड़ के कुएं में डाल दिया. आप सोचिए कि क्या क्या नहीं होता और क्या क्या नहीं हो रहा. That is most dangerous thing and the awakening thing which your viewers should enlighten it. Question is that कि देखिए, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने दो बातें जो मेरे को समझ में आई, वो कहीं कि देखिए, हमें किसी के घर में झांकने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो कुछ दिख रहा है उसको क्लेम मत करो आप. तीसरी बात ये कि उन्होंने कहा भी देखिए कि आज जो है, जो ये लेक्चर दिया था उसका कंटेस्ट था विश्वगुरु भारत. आप देखिए, विश्वगुरु भारत कब बनेगा?
जब भारत की यूनिटी होगी। विश्वगुरु भारत कब बनेगा? जब भारत प्रोग्रेसिव होगा। तो आप देखिए कि लेकिन जो लीगल तरीके से जो काम हो रहा है, ये बात है पत्थरबाजों के लिए, ये बात है उन आतताइयों के लिए जो धर्म की व्याख्या नहीं समझते। उन्होंने कल जो कहा है कि भाई जो धर्म को नहीं समझते वही उत्पात मचाते हैं। हमने देखा ग्लोबल जो विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा, 3 और मेरे पास पैनलिस्ट हैं। आई थिंक दिस इज एन ओपनिंग राउंड। माय क्वेश्चन टू देशरत्न निगम इज, सर, द बेसिक इशू इज why is Mr. Bhagwat being trolled like the other stakeholders? If I say that Hindutva is an ecosystem, if you look at the Twitter profile, why is he being trolled so much? Well, Kartikeya ji, the problem that we have in a society is there are certain section of people that who do not like harmony. And however, at the same time, Hindutva, there is nothing called hardline Hindutva or soft Hindutva. Hindutva is Hindutva, which is very inclusive, which Mohan Bhagwat ji has clearly pointed out. He has also said that those who do not understand the religion properly probably are the ones who create problems. And secondly, if you recall, he was speaking at a function which was Bharat Vishwaguru. So when India is developing at a fast pace and is on its way to claim its rightful place as a Vishwaguru, then there are problems. Some people may take it to the extreme. There are foreign elements who want to disturb this country, as you are already aware of. The problems which arose in Bangladesh, specifically India targeted and Hindus targeted. These are the challenges that he was pointing out. However, when you talk of harmony and progressiveness in the society, it is not a one-way street. Now, if some people say going to the court and taking recourse to the due process of law will create law and order problem, then I am sure India's law and order machinery or in states' law and order machinery is capable of handling those situations and giving an appropriate reply to them. And this is a constitutional right to approach the court. Nobody can deny that right to anybody. These are constitutional and legal rights that have gone to the people through a constitution and an age old. And thirdly, let me point out that our civilization, culture, society, religion, panth are all based on truths. When one talks about consensus about what? Then first the truth has to be established. Once the truth is established, then we can sit across the table, talk about it, how to go about it. If the facts are not established on ground, then the consensus can never be arrived at. And how does a fact is established? Through process of inquiry, which is through the court process that we already have through our constitution. Therefore, truth has to be established and then one must go forward. And as I said, harmony, progress and various other factors is not a one-way street. And everybody has to be on the same platform and must recognize the facts on the ground and the truth. And then we can proceed further. Nobody can deny the right that truth must not be revealed. Those who want to run away from truth are the ones who are hiding something. Okay. Therefore, truth must be established. Then the issue of consensus and rest of the things would arise. Okay, the Places of Worship Act is in the court. The government has not made it stand clear. Let me take a now contrarian position. Savio Rodriguez joins me and Professor Prasanajit Biswas. Let me take a contrarian position on this issue. Do you think, Professor, that is it because of the genie is out of the bottle and there are stakeholders who think that they can become leader of a ideological spectrum which is now at the center stage of the Indian politics, which has displaced Nehruvian socialism, so they can make comments which can create a social media storm and then reclaim their space there. Is it because of that? Yeah, and sort of an echo chamber has been created. If one is trying to imitate what has gone in 1992 in terms of conversion of one religious worship place into another religious worship place. But since then we have drawn the line that no religious place can be converted legally into another religious place. There is a bar on it.
Section 3 of 1991 Places of Religious Worship Act, with Section 5 making an exception to Ram Janmabhoomi, which has been settled by way of a long legal procedure. So an adjudicated legal procedure is absolutely needed. The second important thing is that if we have to progress as a country, social harmony and political consensus are very, very important. So we should not go beyond social harmony and political consensus to dig out certain historical facts that would create a divisive impact, that would polarize our self-respect and would otherize each other before we enter into a larger conflict. Given the situation across South Asia, conflagrating a conflict internally doesn't serve any purpose for our big nation. So therefore, we have to be extremely cautious in talking about a historical fact on which there is no denial that historical facts need to be brought out, but not by digging into the religious place as barred by law. We have to respect that law. And therefore, any survey that is conducted, that has also been barred by Supreme Court until Supreme Court decides on that. So until that point, I think that's a very important point. I think that's a very important point. I think that's a very important. That's a very important point. Savio, a quick response from you. Mr. Bansal wants to come in. Yeah, Mr. Prasanjit had said that the Bansalji, अभी आऊँगा Savio Rodriguez. A quick response from you, and then I'll come to you, Mr. Bansal. Savio. Right. Karthik, thank you for having me on your show. It's great to be with such esteemed panelists. The most important thing that we need to understand and look at us as a country is that we are all citizens of Bharat Mata. So I am an Indian Christian. And when I say I'm an Indian Christian, I'm referring to my religious faith. But my roots are Indic. My roots are Hindu. And that is the reality of what I am. And that's the reality of Bharat. So it is going to, you have to look at it from the kind of communications that people are trying to portray across in India, is that India is about the resurgence of hardliners, hard Hindutva. There's no such thing as that. Hindutva primarily is the essence of Hinduism. Tattva means essence, and it means the essence of Hinduism. So what is Mohan Bhagwat talking about? Mohan Bhagwat primarily is an organization, or the RSS is an organization that works towards national unity. Today, my religion cannot define my nationalism. My love for the country, my commitment to Bharat Mata is what defines my nationalism. However, there are certain sections of society that want to drive a wedge in people of this country, driven by religious differences. And that is unfortunate. And that is what Mr. Bhagwat is trying to address. He's trying to address the fact that we all have to rise above the religious conundrums that we engulf ourselves with and look at it largely from a national perspective, from a nationalism perspective. So today, I as an Indian Christian am proud to claim that I'm a Hindu. What do I mean by being a Hindu? Is that my roots come from Hindustan, the land of the people of Hindus. What is wrong in that? It doesn't change my faith. It doesn't change my religious beliefs. But what it does is intensifies my religious, my commitment towards my country from a nationalism perspective. And today, while RSS, while VHP, while various other Hindu organizations have been working towards ensuring that the religious and the cultural ethos of India is protected, there is one thing we have never been able. But Savio, my question is not being answered. Protect our temples. Savio, my question is not being answered. मैं दोबारा उस चीज को पूछूंगा बंसल साहब से कि ठीक है, संगठन से जुड़े लोग उस संगठन की आवाज होते हैं, लेकिन आज पॉलिटिकल इकोसिस्टम में, जैसे आप हिंदूनेस बोलें या हिंदुत्वा बोलें या हिंदू धर्म बोलें, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना संघ में काम किया, ना वीएचपी में काम किया, ना बीजेपी में काम किया, लेकिन हिंदू धर्म का ढोल वो सुबह 7 बजे से बजाएंगे और रात के 12 बजे तक बजाएंगे. आज वही लोग ट्वीट कर रहे हैं मोहन भागवत के खिलाफ. वही लोग ताली पीट रहे थे, उन्हीं लोगों के लिए ताली भी बज रही थी पिछले 10 साल. आज वही लोग
वही लोग सबसे ज्यादा उछल उछल के बोल रहे हैं। इस, और मैं हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बंसल जी, इस विसंगति को आप क्या कहेंगे? अपने शर्मा जी, मैं एक बात कहूँगा, थोड़ा मुझे निकलना होगा ना, बट आई डू अप्रिशिएट व्हाट सावियो हैज सेड। और मुझे अच्छा लगा आज पहली बार किसी डिबेट में किसी क्रिश्चियन ने और भारत माता की जय की बात करी, भारत माता के प्रति इतनी समर्पण की बात करी। मुझे लगा कि मुझे आज तक कोई ऐसे पादरी नहीं मिले जो डिबेट में जो इस तरह का भाषा का प्रयोग करता हूँ। आई डू अप्रिशिएट, एंड मैं नतमस्तक हूँ इनके भारत माँ के प्रेम के लिए। दूसरी बात यह कि जो अभी विश्वास साहब ने कहा कि भाई देखिए, हमें विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ इस काम को करना चाहिए। तो देखिए, हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे आपने इस साइड का बोला या उस साइड का बोला या किसी भी फ्रेमवर्क में आप ले लीजिए, nobody has taken the law into their hands। आप देखिए कि उसमें जो है ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोग हैं, जो भी अभी मंदिरों को खोजने भी निकले हैं, तो भी किसी ने भी इलीगल तरीका नहीं अपनाया। दिस वी मस्ट अप्रिशिएट। नंबर 2 इज दैट कि देखिए, जो कुछ मिल रहा है, दिख रहा है, वो उसको सामने सामने है। हाँ, ये बात आपकी है, कुछ लोग हैं जो कुछ पब्लिसिटी के लिए भी करते हैं, और कुछ लोग हैं कि जो कि उनका इंटेंशन बड़ा क्लियर है और सामने दिख रहा है, तो वो कैसे उसको स्वीकार करें। आप देखिए, 150 साल पुरानी जो ASI की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट तो किसी हिंदू संगठन ने, हिंदू ने नहीं बनाई थी। उस समय तो मुझे लगता है कि अपना हिंदू महासभा का और आर्य समाज का भी जन्म नहीं हुआ था। तो ऐसे समय में जब वो एक विदेशी ने, जो ASI का चीफ था, उसने वो रिपोर्ट रिलीज की थी, और उस रिपोर्ट के अंदर सैकड़ों ऐसे मंदिर थे जिनके ऊपर जो है मस्जिद नुमा ढांचे, मस्जिद बनाई गई थी, या ये जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे। तो क्वेश्चन ये है कि पब्लिक के अंदर एक ऑटोमेटिक रिसेंटमेंट है ना जी, वो दे वांट टू डिग आउट द फैक्ट्स। और देखिए, ये तो भारत है जो कि सत्य का पुजारी रहा है, हमेशा से सत्य के अन्वेषण में पूरा जीवन लगा देता है। अगर कोई खोज रहा है, मतलब किसी को दिख रहा है और ही वांट टू नो द फैक्ट्स, दिस इज नॉट नोवेयर रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ 1991। और देखिए, जो एक्ट ऑफ 1991 है, वो तो अंडर चेक ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, और किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आप चेकिंग क्यों हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया मामला। वी ऑलवेज अप्रिशिएट द लॉ ऑफ द लैंड एंड द जुडिशरी प्रोनाउंसमेंट्स। तो ये बात इसको एक राइट पर्सपेक्टिव में समझनी पड़ेगी। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो बोला है, उस बात को भी ठीक से समझना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से उन सारे लोगों को, चाहे वो उनको बुरा लग रहा हो या अच्छा लग रहा हो, मैं सबको कहूंगा कि उस बात को ठीक से समझें, उन्होंने वास्तव में क्या कहा, किस डायरेक्शन में कहा और क्यों कहा, और आज इसकी आवश्यकता किस बात की है। देखिए, हम ये बात कहते हैं कि जब मैं सुबह प्रातःकालीन यज्ञ में जब आहुतियां लगाता हूं शर्मा जी, तो उस आहुतियों में जो वेद मंत्र हैं, उनमें सबसे बड़ा वेद मंत्र जो है ना, भारत माँ की आराधना का है। आप देखिए कि वो राष्ट्र की आराधना का मंत्र है वो। और वो क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं कि धर्म से बड़ा मेरा राष्ट्र है। ये भावना प्रत्येक देशवासी के अंदर होनी चाहिए, अक्रॉस द रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड सोसाइटी। यही बात मैं कहना चाहूंगा। मुझे पता है आप जाना चाहते हैं, लेकिन मैं एक चीज मैं आपसे बड़े स्पष्ट रूप से पूछना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि संघ के सरसंघ चालक किसी एक चीज पे बार बार बोलते चले आए। ये बहुत ही रेयर होता है, और ये रेयर चीज हमारे सामने हो रही है। इसका मतलब है कि इसको लेके उनको चिंता है। इसका मतलब है जो 2022 में उन्होंने बोला था कि यार आप मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढिए, उनको इस ये जो जुडिशियल केसेस हो गए हैं इतने सारे, इसका मतलब है कि मोहन भागवत जी को उसकी चिंता है। नहीं तो कोई एक विषय पे इतना बार बार इतना कोई बड़े पद पे बैठा व्यक्ति तो बोलेगा नहीं। नहीं, देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसका जो इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं वही इंटरप्रिटेशन है। आप देखिए कि वो बोलते, देखिए, पूज्य संतों की बात हो या किसी विशिष्ट व्यक्ति की बात हो या वेद उपनिषद हमारे दर्शन शास्त्रों के लिखे हुए वाक्यांश हो, उनका एक एक शब्द बड़ा मीनिंग रखता है जी। और उस मीनिंग का इंटरप्रिटेशन वही व्यक्ति निकाल सकता है, या वो ऐसे उनसे जुड़े हुए कुछ विद्वान और विदुषी हैं वो निकाल सकते हैं। वी आर नॉट द राइट पर्सन टू इंटरप्रेट हिज वर्ड्स एक्चुअली। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके उनका जो डायरेक्शन है उसको समझना पड़ेगा कि देश की एकात्मता और विश्व की शांति, और तीसरा ये सत्य की खोज, तीनों चीजें साइमल्टेनियस चलनी चाहिए, जो ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। तो इसलिए इसमें कोई व्याधा नहीं आनी चाहिए। देखिए, अगर कोई पत्थरबाजी करता है इस बात को लेकर के तो वो गलत है ना जी। अगर कोई धर्म के आड़ में आतंकवादी अड्डे चलाता है तो गलत है ना जी। पैगंबर के नाम पर सरतन से जुदा की गैंग को चलाता है, लव जिहाद के अड्डे चलाता है तो गलत है ना जी। वो रिलीजन नहीं है, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज धर्मा। तो वो उनका पर्पज यही है। और देखिए, ये तो धर्म की व्याख्या अनवरत रूप से समाज करता रहा है।
पूज्य संत करते रहे, श्रेष्ठ लोग करते रहे। बंसल जी, तो उसी विश्व हिंदू परिषद संत समाज से जुड़ी रही है, आप लोगों का काम संत समाज से जुड़ा रहा है, लेकिन आज ये संत समाज आप लोगों के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, कोई खिलाफ नहीं बोल रहा। देखिए, ये पूज्य संतों का पाथे है जो हमें आज प्राप्त हो रहा है। आप देखिए, हम ये मानते हैं कि पूज्य संत जो बोलते हैं ना जी, हमें वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि उनकी हर वाणी के अंदर हमारे लिए आशीर्वाद और हमारे लिए कुछ ना कुछ करणीय कार्य छुपा हुआ है। तो इसलिए उनकी बातों को तो बुरा मानने का कोई अर्थ ही नहीं है, और ना वो बुरा बोल सकते। उनके तो हृदय के अंदर इतनी कोमलता होती है, इतनी विद्वता होती है, उतना समर्पण, त्याग और की भावना होती है, राष्ट्र के प्रति भी, धर्म के प्रति भी, व्यक्ति के प्रति भी। तो उसके बारे में तो ऐसी कल्पना करनी हमारे लिए कल्पनातीत है ना जी। हम उस बारे में कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है कि ये पाथे का विषय है। दोनों की बात को ठीक डायरेक्शन में समझने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है आपके शुद्ध दर्शक इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद। Well, views are very much divided on it. It's time for a short break, but before we go into a break, let me play out 2 bites. One by Baba Ramdev, and second Brinda Kharat, and then I'll be back and I'll go to Desh Ratan Nigam and Professor Prasanjit Biswas. ये सच है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्म स्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया और इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ थे, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, उनको खंडित किया। अब उनको कितना दंडित करें, कितना न करें, ये तो काम न्यायपालिका का है। लेकिन इतनी बात जरूर है, जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। भागवत जी की जो बात है, अगर वो अपने ही देश से शुरू करे और अपने ही संघ परिवार से शुरू करे कि वो कहाँ तक अपने धर्म को समझ रहे हैं, क्या उनके धर्म में ये लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत पैदा करो, क्या ये वो धर्म को सही समझ रहे हैं? ये एक सवाल है। दूसरों को तो हम ज्ञान जरूर दे सकते हैं, लेकिन अपने संघ परिवार को आप पहले समझाइए। अपने धर्म के बारे में, अपनी फिलॉसफी के बारे में, अपनी मिली जुली संस्कृति के बारे में पहले तो उसको समझाइए। You remember when someone had hit our car? I had got him to pay up for all the damage. Yeah, so? If something goes wrong in this guaranteed return share, I will complain to the exchange and get full compensation. See, this is an agreement. Dad, you know what? Nobody can promise guaranteed high returns in the share market. Such illegal schemes are sheer fraud. The exchange will not give any compensation for these. That agreement is also useless. Bonjour, Nat. आज बड़े फ्रेंड्स बन रहे हो? हाँ? याद है 10 साल पहले मैंने कहा था I will take you to Paris. पेरिस नहीं, पेरी। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन भी ना तुम्हारे इरादे की तरह। मैडम, इरादे कभी ऑफ नहीं होते, टेक ऑफ करते हैं। SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम के गारंटीड रिटर्न से करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ, अपने लिए, अपनों के लिए। Okay, now let me straight away go to Desh Ratan Nigam. Sir, there are 2 parts of this argument. One part of the argument is there is an act which is now under judicial consideration in the Supreme Court of India. And the 2 parts of arguments are, one, yes, in medieval India, a lot of temples were destroyed and mosques were erected on them. And those are the grievances. And the other side of the argument is pertaining to that these grievances cannot be dealt with legally. Under the legal infrastructure, these are historical issues. But then how do you redress the balance? Because if matters such as these in every district go to court, then India will be ending up with, I think, more than 1,000 cases. Well, Kartikeya ji, we live in a constitutional democracy.
where judicial remedies are provided within our constitution and the acts which have been framed under that very same constitution. Therefore, people have the right to approach the courts for the redressal of their grievances, and the courts finally decide. This is how constitutional democracy functions, where there are checks and balances on the various pillars of the system, a governance that we have. And that right cannot be taken away by anyone, including the government, or the courts even can't take away that right. Therefore, if anybody has a grievance, they approach the court. Yes, number of cases have been coming up, no doubt about it. And Places of Worship Act that you talked about, everybody starts quoting Section 3 and Section 5. But conveniently, people skip Section 4. Because Section 4 provides an exception to Places of Worship Act, which says if there are ancient monuments, archaeological sites and remains, which are more than 100 years old since 1958, from 1958, which means 1858 onwards, prior to that, then it is not covered under Places of Worship Act. And all these sites are more older than the that particular act, and that particular act has not been stayed by any court of law. It is where the Archaeological Survey of India comes into the picture, and even the court's interim stay, which has been granted by the court, is direction to the court that please do not entertain the petitions or order any surveys and all. This is the direction to the court, but not to the Archaeological Survey of India, whose objective under the act is to excavate and find out those ancient monuments, remains, and then preserve them. Therefore, ASI is absolutely free to do to achieve the objective for which it has been created under a particular act. Now, the problem arises if we take it to the extreme. That extremity is the problem. It is some people who want to politicize it. That politicization becomes a problem where people start taking law into their own hands. Now, if you are approaching, even if I am approaching, or any of the panelists or the anchor is approaching a court, that is not illegal. To throw stones because somebody has approached the court and there is a court order to take law and order in their own hands, that is illegal and unconstitutional. That has to be dealt with. Otherwise, democracy cannot function. You will not obey the court's order. You will say, might is my right, and I'll come on the streets and I'll try to, control a site. Let's talk about Sambal. Sambal was a site. I have a related question. I got your point, sir. I got your point. That was a court order. My point is very simple. People have constitutional remedies. It is perfectly okay to know what happened to your heritage. But I'm saying that there must be 20,000, 15,000, 10,000 mosques or 10,000 disputed structures, if I may use the word like that, anodyne word, disputed structure. If all of them go for litigation, then what happens? That was my question, sir. I understand the logic of historical grievances. With due respect, yeah, I understand there are historical grievances, and a lot of people say legal framework is not the way you redress issues. But then if all of them go to the court, then what happens to the fabric of the society? I want to know that part of argument from you, sir. Let me come to that. Now, if you recall, the Hindu side only wanted 3 sites, most prominent sites, and they said, you please give it to us, it's so visible. But I don't think people got interested in it, in certain sections of the society. Even in Ram Mandir, people wanted to give it over to the Hindus, but the politicians, the leftists came to the picture. It is a matter of record also in court, if you read the judgment. And there was a solution. Then some people came into the picture and one could not reach a solution. Here the issue is the various sections of the society, community, whether Muslims or Christians or Hindus, first admit the particular fact that this particular site or a temple was destroyed and the structure was made forcefully. One. Secondly, other question that arises is the sections of the society will have to very clearly, according to their religious tenets and directives and dictions, whether a particular structure which has been destroyed was a temple and a subsequent structure was built on it, whether such a structure which has been forcefully built is a mosque or not under Islam.
That's a very important question. Okay, but you're saying, but then there can be a contrarian argument. Then why should the people who live today be responsible for atrocities or wrong committed by their forefathers? Prasanajit, is this the way forward? No, once again, the religious character of a place of worship need not be altered beyond 1947. It's a kind of a legal adjudicated position. Now, Archaeological Survey of India in no way alters the religious character of a place of worship. That's a kind of a open and shut case, I would say. That kind of at the big country, we cannot allow a conflagration to happen based on a historical fact. A historical fact in which post-1947 generation has no role, though it's part of our historical memory and tradition. Yet we draw a line somewhere so that what has gone back in the history, we do not return to that historical past. Now, this is also a ploy to mobilize people for various kinds of political and vested interests. And that actually mars the social fabric, the fabric of coexistence, mutual love, and mutual respect to each other gets diminished by that. And that creates a crisis for the national unity as well. So therefore, it's a hard achieved freedom that we have got in 1947. And it also requires that social harmony be maintained, especially the minorities, the other religions, the non-Hindu population should be treated with great respect, including Muslims of this country. So therefore, there is no reason why as a Hindu, I should really look for correcting all the temples. A particular temple of great importance has been corrected. Doesn't mean it has to be replicated everywhere. Now, if it is to be replicated, there are problems with Buddhist, Jaina temples, other religions also get involved. Let's not open up this Pandora's box. Let's understand that the social fabric is built on understanding each other's religious tenets and faith. I need to close the argument and I need to get Savio in because, he got the least of time. Do you think it's a Pandora's box? Do you think it's a Pandora's box or correction, Savio? And how do you? I think it's very important. And how do you position yourself? I really need to know. How do you position yourself? I'm saying, are you responsible for your forefathers? As an Indian Christian, let me say this very, very categorically. What my ancestors did for converting many, many years ago, whether it was force, whether it was coercion, or whether it was their own personal choice, that was a choice that they made, and I respect it, and I love them for it. Why I choose to follow the Christian faith is my choice. But that does not change me, and that does not make me less of an Indian. And what is important for us is to ensure that religion does not define nationalism, and it has never defined nationalism as far as our constitution is concerned, and as far as the tenets of our founding fathers was concerned, as far as India is. So I, as an Indian Christian, respects the fact that I do have Hindu lineage, and it is something that I'm proud of, something that I'm connected to. My Indic roots, my cultural roots, I'm not going to shy away from that. Should I know what my history is all about? Yes. I come from a place in Goa which had a tumultuous history. There was the Goa Inquisition. That's the reality of what happened. Should my children know about it? The answer is yes. They should know about it. They should know what their history is. They should know what our ancestors went through. Not for them to be hateful towards anybody else, but for them to know that if we do not stay united with our cultural togetherness and our religious preferences, we will again become victims of those divisions that were played with us many, many years ago. Okay. So it's not important for us to know history. Okay. I'm really fallen short of time. I just have time to say thank you to all of you, because this is, I just really have, I would have loved to listen to Mr. Nigam, Mr. Bansal and Professor Biswas, so many different views, but at least
it comes to one point which I really admire, is civility of the conversation which I get to have with all of you. And that's the really heartening thing. And my takeaway is Hindutva ecosystem should pay heed to Mohan Bhagwat. His sense of moderation is not weakness. It creates consensus in society. So that's all on point. On the other side, we will discuss Khalistani terror groups backed by ISI and masterminded by UK Army servicemen. Don't go away.